ready for the excitement. Yeah. Good evening, Abhilash ji. Good evening. Good evening, Sumit ji. Good evening, Abhilash. Good evening, Shamsuddin sir. Very good evening. Good evening. Harinder ji. Good evening, sir. Good evening. King Khan. Hello, everybody. Good evening, sir. Good evening. Archit. Yes, sir. Abhilash ji, good evening. Good Suji bhai, evening. good evening. Good evening. Great to see you all. Wonderful Viva Very good evening, evening, Sharif very good ji, evening. Hadi Matthew ji, Nishad Yes. ji, Prem ji, Sharif ji, can you Shamsu hear sir, my voice? Ramesh ji, Virender ji, Wonderful, wonderful, wonderful. Thank you. Raghupati I Lagit, welcome Azeno madam, our Ashok Ramesh. honorable Good evening. Good evening, sir. CEO, our US operations head Sharif ji, our operations head Mr. Hani Matthew, our most respected Dr. M. Shamsuddin, our Yes, first thank you, Prem. Lady Diamond of our company, DAC member, respected Azenu Haralu ma'am, our beloved DAC member, Dr. Sumit Batra, our Black Diamond Ambassador, DAC member, Mr. Sujit Khan, our Black Diamond Ambassador and DAC member and mentor for US Vibrant Viva, Mr. Archit Ramesh, and also Black Diamond Ambassador, DAC member, respected Varinder Ji, Thank you, Black sir. Diamond Ambassador, DAC member, Mr. Rudresh Satyendra, Thank you, sir. Black Diamond Ambassador, DAC member, Raghupati Nageshwar Rao Garu, Black and Diamond Ambassador last but not the least, and DAC also member, our Mr. Prem compliance Kumar. head, Mr. Nishad Ji. And last but not the least, I want to welcome our Indus Viva Parivar. Indus Viva Parivar को मेरा स्वागत है, नमस्कार,
वार्म वेलकम। और आज जितने भी लोग आज हमारे फेसबुक पर कनेक्टेड हैं, आप सभी लोगों को मैं स्वागत करना चाहूंगा। एंड मुझे पता है और भी लोग, शायद ट्रैफिक जैम हो रहा है फेसबुक पर आज, और ये खबर शायद फेसबुक वालों को पता नहीं है कि इंडस विवा के परिवार के लोग आज इकट्ठा हो रहे हैं कुछ खास सुनने के लिए, कुछ खास महसूस करने के लिए। और मैं और समय वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। आपके और हमारे सीईओ के बीच में मैं आना नहीं चाहूंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्यारे, आवर बिलावड सीईओ एडवोकेट अभिलाष थॉमस जी को यहां पर आप लोगों के स्क्रीन पर आज के इस सेशन की शुरुआत करने के लिए एक शानदार जबरदस्त तालियों के बीच मैं स्वागत करना चाहूंगा अभिलाष जी को। ओवर टू अभिलाष जी। मिशा जी, कैन वी हैव सर ऑन द स्पॉटलाइट? Good evening, everyone. Thank Good you. evening. Yes, Good evening, sir. Good thank you so much for joining in such a short notice. Because a few things, when some thought process are coming in, when some intellectual stimulations are happening, that has to be shared without its heat is going down. It is like a tea. If it is served hot, it will taste more. The same philosophy. So it's like at Indus Viva, we cannot wait even a minute to share with, as my host Mr. Prem Kumar said, it is like Hamara Parivar ko, the large family of Indus Viva. We cannot wait to share with you all loved ones. So that is the reason we have come forward this quick meeting. This is something which got conceptualized today post lunch, to be honest with you, and we had an available DSC meeting because it is like when it is in short notice. So whoever is available, if minimum 6 people are there, we used to conduct a meeting. That is the way the quorum get complete. So the council has unanimously supported this. So they fine-tuned it. So here what we are presenting in front of you. So Dussehra, Diwali, all auspicious days are in and around. See, there cannot be a better day to share with our Vivaites. Story short, some hearsay. Hearsay means informations, but without ownership. Somebody told me, sir. Who is that somebody? That, sir, from my friend only. He also heard from somebody, sir. So it is all somebody. It's like the news doesn't owned by anybody. Is saying that, see, Indus Viva, USA story and all, only story only. And they are talking about Ayurveda, a product manufactured in USA. All those things are all, it's all story only. And we have heard much bigger stories in MLM, much more believable stories in MLM. According to them, there is absolutely nothing called Indus Viva USA in existence. This is what people are informing us, that a lot of hearsays are around. A lot of hearsays are around. So another interesting point is, like this kind of stories were there in India, but definitely not in MLM industry, in money chain industry. But unfortunately, many people cannot differentiate multi-level marketing and money chain. When I discussed with one of my uncles, that uncle, the company which I am working for is launched their business in United States. The immediate response was,
This type of business is allowed in America. That was the immediate response. This type of business is allowed in America. I got shocked. I said, uncle, is it like sandalwood tree cutting in forest kind of business you are thinking for Americans not to allow this? Actually, for them, America is a high standard country. In that country, this type of businesses are not allowed. Poor uncle doesn't know this business got originated in America. After 70 years only, it came from America to India. But what to do? They don't have any clue about it. And I said, Uncle, Consumer Protection Act 2019 legalized this business in India also. What consumer, what protection, what legalization for them? So these type of perceptional issues are around a lot. One so-called MLM expert, he is a consultant for many companies. He said, America is not a suitable market for Indian companies. Indian companies should go to countries like Malaysia or Dubai. Or still you can go to Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, but Europe, America, and all, no. Indian companies cannot go there. Actually, I feel pity for them, those who underestimate the abilities of Indian people. What 21st century Indians can do, I really feel pity for them. So, end of the day, we have concluded this discussion because at Indus Viva, our DSC finally will land anything with a solution and with a positivity. We concluded in such a way that, yes, seeing is believing. Everybody at least believe their own eyes. So we have taken a decision that as a Diwali gift, as a 350th week gift, next 72 hours, I repeat, next 72 hours, our Indian friends can order Ayurveda under certain conditions. Only for next 72 hours only. Only 72 hours they can order under certain conditions. Please don't look at me with a very certain face. I am not responsible for this because this is what the decision the council has taken. Only star 500 and above only can place the order. Number one condition. Number two, nobody can buy more than 4 products. I request you buy one if your downlines requires only 2 or 3 or maximum 4. Because we are airlifting the product from US. It is very expensive. And US, manufacturing cost is so high. And of course, in India, when it is coming, the customs duty is there. There are so many things involved in it. But in this situation, if you order the minimum quantity, this is actually not for us for consumption, just to keep it as a souvenir at home. When our relatives or somebody is coming, you can show, uncle, this is called Ayurveda, conceptualized by Indians, formulated by Indians, manufactured by Indians in the United States of America, and sold only through multi-level marketing. You cannot buy this. Your superior officer cannot buy this. Your neighbor cannot buy this. Only I could buy as a special privilege because I was a star 500 distributor of Indus Viva Health Sciences. You know that
American standards are very, very high, very, very high. There are so many Indian companies exported their products to America, but they could not clear the US customs. They had to take back the material to India. To clear the US customs, your product quality should be beyond our level of imagination. That level of quality is required. When people are saying, generally in America, an Indian product is passing US customs, impossible. Then Indian people used to say, an Indian MLM company's products passing US customs, impossible, highly impossible. The competitors, Chotawala companies, forget about for them to go to do America and do business there. They cannot even get a US visa and to go there. And they are doing the hearsay. There is nothing called Indus Viva in America. There is nothing called Ayurveda in America. These people are only bluffing. But seeing is believing. Seeing is believing. A tribal person who lives in the deep forest, if you show him an aeroplane is flying in the sky and you are telling him 400 people are sitting in that, this is something called aeroplane, he will tell, no, 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 such a small thing, 400 people are sitting. Are you mad? It is only another bird. That only he can tell. So dear friends, unless and until that tribe is taken to airport and he sees with his own eyes that that aircraft is landing and thus many number of people are coming out from the aeroplane, he will not believe it. During my childhood, I remember, I belong to a district where there is no airport. There, whenever one aeroplane is coming, flying, we used to come out from the house and look at the aeroplane which is flying in the sky. We used to do that during our childhood. And from school times, we used to go for excursion to airports to see the airport and aeroplanes. That seeing made us to believe the concept of aeroplane. The same way, some people in the Indian MLM industry, we have to make them see and make them believe this is, Indus Viva product made in America. As a souvenir, you buy this product. You keep that product in your hand with a tag, not for sale. Not for sale. Kohinoor diamond is not for sale. Something of that kind. A limited edition, 350th week, limited edition. Ayurveda, advanced Ayurveda. All the way from the US to India. Starting from tomorrow, next 72 hours. Come fast and ensure for you and your downlines, at least you are securing it. Over to the master of the ceremony, Mr. Prem Kumar. Yes. Thank you, Abhilash ji, for the wonderful message what you have shared with us. I would like to, first of all, thank you for announcing this amazing information for all our Indus Viva family members today. And I'm sure that many myths which people are having through this will be able to be busted through this real piece of souvenir, what we are going to get it all the way from United States. And definitely, I know my fellow DAC members are very, very excited from the time we have come to know about this. And now I would request our, our beloved, most respected Dr. M. Shamsuddin to share his excitement to the people of, especially God's own country, Kerala, whatever he wants to say about today's announcement
from his side, because he is a man who has got so much of vast experience in this industry, and he speaking first on this is, I think, the right thing. So I request Dr. Shamsuddin. Nishaji, can we have Dr. Shamsuddin on the spotlight? Yes, sir, thank you, Mr. Abhilash, for your wonderful announcement today due to this 350 week our celebration. Thank you, Mr. Prem, for introduction about me. ഇന്ന് ദിസ് ഈസ് മലയാളം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു ദിവസമാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച്. എല്ലാവരും ഇൻഡസ് വിവ അമേരിക്കയിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് നടക്കില്ല എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. കാരണം അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ആ ക്വാളിറ്റിയുടെ വ്യത്യാസം, സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ഡിഫറൻസ് വളരെ വലുതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അമേരിക്കൻ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്. അമേരിക്കൻ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ ഇൻഡസ് വിവ അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയും. അപ്പൊ ഇൻഡസ് വിവ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പനി, നമ്മുടെ കമ്പനി അമേരിക്കയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അതൊരു തമാശയാണ്, നടക്കില്ല എന്ന്. പക്ഷെ 2019 ഏപ്രിൽ ഇൻഡസ് വിവ പ്രീ ലോഞ്ച് ചെയ്തു. 2020 ഏപ്രിൽ ഇൻഡസ് വിവ ബിസിനസ് അവിടെ സ്പീഡാക്കി. ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് അത് ഭയങ്കര ഹിറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, റെക്കോർഡ് സെയിൽസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇൻഡസ് വിവ ആ പ്രോഡക്റ്റ് അവിടുത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ കയറുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും അറിയുന്നത് ഇൻഡസ് വിവ ഹൈവേദ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ, അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡോക്ടേഴ്സ് പോലും അവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടുകയാണ്. കാരണം ഡോക്ടർ പോലും അവർക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആ ഡോക്ടർക്ക് പോലും പറയാൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡില് അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് 72 മണിക്കൂറിനകത്ത് നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം. നാളെ മുതൽ ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾക്കാര് സ്റ്റാർ 500 above ആൾക്കാര് മാക്സിമം 4 പീസ് വീതം അവർക്ക് വേണ്ടിയും അവരുടെ ടീം മെമ്പർമാർക്ക് വേണ്ടിയും നാളെ മുതൽ ഓർഡർ ചെയ്യാം. ലിഫ്റ്റിംഗിലാണ് പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഓവറായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പെർമിഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ 4 പ്രോഡക്റ്റ് വീതം നിങ്ങൾ മേടിച്ച് 500 above റാങ്ക് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ മേടിച്ച് അത് നിങ്ങൾ ഷോ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ടീമില് ഓരോ ആൾക്കാരോടും ഇത് കാണിച്ചാൽ അവരുടെ ബന്ധുക്കള് അവരുടെ സ്വന്തക്കാര് US-ലും മറ്റുള്ളപ്പോ അവരത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അമേരിക്കയില് ബിസിനസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ ഒരവസരം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി ഇന്ത്യൻസ് എത്രയോ ലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻസ് US-ൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആ ഇന്ത്യൻസിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഡസ് വിവ ക്ലിക്കായതുപോലെ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കോ വർഷങ്ങൾക്കോ ഇടയിൽ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജ്യത്തും മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ മീൻസ് ബേസ് ആയ ആ രാജ്യത്തും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്ന രാജ്യമായ അമേരിക്കയിലും നമ്മുടെ കമ്പനി ക്ലിക്കാകും. അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു അവസരം നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാനല്ല, അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടീമിന് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല. അത് ഉപയോഗിക്കണം, നമ്മുടെ ടീമിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത്. പൊതുവെ ജനങ്ങൾ പറയുന്നത്, ജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയർപ്ലെയിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന പോലെയാണ്. സപ്പോസ് ചില വനത്തിനുള്ളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാര് അവർ എയർപ്ലെയിൻ പറന്നു പോകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് 475 പേര് 525 പേര് 700 പേരൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല. പക്ഷേ അത് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ അവർ എയർപോർട്ടിൽ പോയി ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുപോലെയാണ്
തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് പല ആൾക്കാരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നടക്കില്ല. പക്ഷേ ഇത് നടത്തി. കമ്പനിയുടെ ആ ചലഞ്ചിങ് ചെയർമാന്റെ, മാനേജ്മെന്റിന്റെ, ഈ DSCയുടെ, നമ്മുടെ സിഇഒയുടെ ആ ഒരു തീരുമാനം അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിഭയങ്കരമാണ്. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് കുതിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ദിവാലി പ്രമാണിച്ച്, പൂജ പ്രമാണിച്ചുള്ള ഈ അനൗൺസ്മെന്റ് ഭയങ്കരമായി എടുത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് മാത്രം ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും അതിലൂടെ വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ചുരുക്കുന്നു. വിഷ് യു ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, Dr. Shamsuddin, sir, for your amazing sharing on that in Malayalam for all our people from Kerala, not just in Kerala, or around India and outside India, those who are listening, our friends, those who wanted to listen in Malayalam. Now, friends, अब हम जाएंगे थोड़ा नेशनल लेवल पर, और आज इंडस विवा परिवार के साथ हिंदी में जो भी अभिलाष सर ने यहाँ पर बताया हमें, उसकी एक सारांश यानी एक समरी देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आइकन ऑफ द ईयर 2019 डॉक्टर सुमित बात्रा जी को यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट, डॉक्टर सुमित बात्रा जी को फिर से एक बार मैं स्वागत करना चाहूंगा तहे दिल से. ओवर टू सुमित जी. सुमित जी, लव टू लिसन टू यू. हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं आपसे सुनने. थैंक यू सो मच प्रेम जी, थैंक यू सो मच अभिलाष जी. आज का ये जो सडन न्यूज है, इस न्यूज ने पूरे इंडस विवा को शेक कर दिया. रीजन है, आज से लगभग 6 साल पहले जब इंडस विवा लॉन्च हुआ था 2014 में, तो हमारी जो पहली विवा डायरी थी उसमें ये मेंशन था कि इंडस विवा विल लॉन्च देयर ऑफिशियल ऑपरेशंस इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वो भी लिखा था कि 2019 में हम यूएस लॉन्च करेंगे. मगर अभी तक ऐसा हुआ नहीं था कि किसी इंडियन कंपनी ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कभी ऑफिशियल बिजनेस लॉन्च किया हो. दुबई, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, तो सब लोग सोच सकते थे, बात कर लेते थे, लेकिन यूएस लॉन्च करना वाज क्वाइट टफ मींस क्योंकि कभी किसी ने किया नहीं था. 2019 में हमने वो किया जो कभी किसी ने किया नहीं था. हम लोगों ने यूएस को ऑफिशियल लॉन्च किया. मगर इंडियन इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा, आज भी बिलीव नहीं हो रहा कि इंडस विवा यूएस में बिल्ड हो रही है. इनफैक्ट हम लोग एवरी वीक 2 बहुत बड़ी जूम मीटिंग्स करते हैं, और यूएस में हमारे प्रोडक्ट से लेकर लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं. इनफैक्ट जो इंडियन कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और जो यूएस सिटीजन्स हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं. आयुर्वेद जो हमारा प्रोडक्ट है वो अपनी एक जगह बनाता जा रहा है यूएस के अंदर. मगर 350th वीक टू कंप्लीट हुआ, उसमें आपने जो गिफ्ट दिया है, ये गिफ्ट सच में बहुत बड़ा गिफ्ट है हम सब लोगों के लिए. फ्रेंड्स, जितने भी हमारे दोस्त इसको फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं, मैं आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड. मैं बहुत उत्साहित हूँ ये बताने में जो अभिलाष जी ने बोला है कि सीइंग इज बिलीविंग. जब जो चीज आप महसूस कर सकते हैं, जो चीज आप देख सकते हैं, जो चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर आप भरोसा कर पाते हैं, राइट? तो अगले 72 आवर्स के लिए, अगले 72 घंटे के लिए इंडस विवा इंडिया में हमारे जितने भी स्टार 500 एंड अबव है, वो आयुर्वेद का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और यूएस से प्रोडक्ट कंपनी इंडिया में वापस मंगवा रही है कुछ प्रोडक्ट अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देने के लिए. मगर यहाँ पर कंपनी एक रिक्वेस्ट कर रही है कि कोशिश कीजिए कम से कम अपना ऑर्डर प्लेस करें. मैक्सिमम एक स्टार 500 सिर्फ 4 आयुर्वेद का ऑर्डर कर सकता है मैक्सिमम. वो भी इसलिए कि अगर आपको अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देना चाहते हैं आप, तो उनको दे सकते हैं. बड़ा लिमिटेड क्वांटिटी हम लोगों ने यूएस से इंडिया मंगवाई है, लिमिटेड एडिशन है. और आईफोन 12 तो ले ही लिया होगा बहुत से लोगों ने. आईफोन 12 प्रो भी महसूस करके देख ले कैसा है, राइट? इनफैक्ट हमारा आईपल्स अपने आप में एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, एक कमाल की साइंस है. मगर नो डाउट आयुर्वेद यूएस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डेवलप किया गया है. इट इज, मैं ये नहीं कहूंगा आईपल्स से बेटर है, थोड़ा डिफरेंट. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपने 4 आयुर्वेद का ऑर्डर प्लेस करने के लिए, बिकॉज आयुर्वेद बार बार नहीं मिलेगा इंडिया में हमको. और आयुर्वेद मैं
बिल्कुल यूज करना चाहता हूं। मैं पिछले 1 साल से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स आयुर्वेद के इंडिया मंगवाए जाए ताकि हम उसके यूज कर सके। बिकॉज जब मैं यूएस में लोगों से बात करता हूं तो यूएस में लोग आयुर्वेद का जो फीडबैक देते हैं वो फीडबैक बहुत कमाल का होता है, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीडबैक होता है। तो मेरा भी दिल करता है, बहुत से लोगों का दिल करता है कि आयुर्वेद हम भी यूज करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर जितने भी स्टार 500 एंड अबव हैं, मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि सब लोग अपना आयुर्वेद का ऑर्डर जरूर प्लेस करें। और मैं चाहूंगा कि फेसबुक पे जितने भी लोग आयुर्वेद का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो एक बार कमेंट भी जरूर करें, आई एम प्लेसिंग आयुर्वेद ऑर्डर, आई लव इंडस वीवा। अगर आप लिखेंगे आई एम प्लेसिंग माय आयुर्वेद ऑर्डर, आई लव इंडस वीवा, तो ये यकीन हो जाएगा हमें, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से इंडस वीवा स्प्रेड कर रही है, जिस तरह से नई नई कंट्रीज को हम डेवलप करने का, ओपन करने का सोच रहे हैं, अभी बहुत सारी एक्साइटमेंट्स, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स होनी बाकी है। 2021 पूरी तरह से एक्साइटमेंट्स के साथ, उत्साह के साथ और बहुत सारी बड़ी बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस के साथ भरा हुआ है। और 2021 इंडस वीवा के जर्नी के अंदर एक बहुत बड़ा टेक ऑफ ईयर साबित होने वाला है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग। थैंक यू सो मच corporate, thank you so much honorable chairman, and thank you so much everyone for this amazing initiative. And over to Prem ji. Thank you, Sumit ji, for the wonderful sharing. I know आपने अब यहाँ पर और आग लगा दिया अब लोगों के अंदर। अब मुझे लगता है लोग अभी immediately order place करने जा रहे हैं। Thank you very much. That was Dr. Sumit Batra, our honorable DAC member and a Black Diamond ambassador. Thank you, Sumit ji. And दोस्तों, अब थोड़ा सा हम साउथ इंडिया में यहाँ पर आते हैं कुछ लोगों को लोकल लैंग्वेज में समझाने के लिए। और सबसे पहले நம்ம பொன்னான மக்கள் தமிழ்ல இன்னைக்கு இந்த விஷயத்தை பத்தி சொல்றதுக்காக அன்புடன் மேடைக்கு இண்டஸ் வீவாவுடைய நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொல்லலாம், முதல் தடவை டைமண்ட், பிளாக் டைமண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அடைஞ்ச நம்மளுடைய அருமையான தலைவர், நம்ம அனைவருடைய இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய சுஜித் கான் அவர்களை சில வார்த்தைகள் தமிழில் பேசுமாக கேட்டுக்கொள்கின்றோம். Thank you, Premji. Thank you very much. நன்றி தலைவா. Over to you. I'm really excited. Actually, நான் வந்து டிராவலிங்ல இருக்கு. திடீர்னு வந்து டிஎஸ்சி மீட் கூப்பிட்டதுனால ஒரு ஐடியா இல்ல. அப்ப டிராவலிங்ல இருக்கும்போது நான் நினைச்சது, எனிவே சிஓ எப்போ வரும்போது ஏதோ ஒரு நியூஸ் இருக்கும். சோ இந்தியாவில டெவலப்மெண்ட பத்தி ஏதாவது ஒரு எக்ஸைட்டிங் நியூஸா இருக்கும், இல்லைன்னா நம்ம கம்பெனி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போற ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்கும், இல்லைன்னா ஏதோ ஐடியல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அப்படியெல்லாம் நினைச்சு டிராவலிங்ல இருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு வந்து சார் அனௌன்ஸ் பண்ணப்போ ஐ எம் ரியலி எக்ஸைட்டட் டுடே. தேங்க்யூ அபிலாஷி, தேங்க்யூ ஃபார் த வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. பிகாஸ் எக்ஸைட்மெண்ட் எதுக்குன்னு சொன்னா, கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 7 years பேக் இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்டுக்கு வெயிட் பண்ண ஒரு காலம் இருந்தது. 2014 அன்னைக்கு ஐபல்ஸ் ஒரு வாட்டி சாப்பிடணும், அன்னைக்கு அந்த ப்ராடக்ட் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி வந்து நம்ம சிஓ கையில இருந்து எல்லாம் வாங்கும் போதெல்லாம் வந்து அது ஒரு பயங்கர த்ரில். அந்த போட்டோ இப்போ நான் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கு. ஆஃப்டர் 7 yearsக்கு அப்புறம் அது பார்க்கும்போது நம்ம ஐபல்ஸ் லான்ச் இன்னைக்கு எனக்கு பெங்களூர்ல ஞாபகம் இருக்கு. அந்த போட்டோ, அந்த ப்ராடக்ட், அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாட்டில் எல்லாமே. சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம மெதுவா முன்னாடி போகும்போதெல்லாம் யூஎஸ் ஓபன் பண்ணும்போது நிறைய மக்கள் சொல்லி இருந்த ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, யூஎஸ்ல எல்லாம் இந்த கம்பெனி வராது, இந்தியன் கம்பெனி எல்லாம் யூஎஸ்ல எப்படி வரும், அப்படி எல்லாம் கேட்ட கேள்விக்கு நம்ம பதில் சொல்லியாச்சு. யூஎஸ்ல போய் ஸ்டார்ட் பண்ணது கிடையாது. ஹூஸ்டன்ல பெரிய பில்டிங்ல பெஸ்ட் நம்ம ஹெட் ஆபீஸ் எல்லாம் ஓபன் பண்ணி ஸ்டைலு காமிச்சுதான் வந்தது. அப்போ நினைச்சது இனி ஐவேது ஒரு வாட்டி சாப்பிடணும்னா கம்பெனியோட 500 வீக் செலிப்ரேஷன்ல ஒரு பெரிய ரேங்க் எல்லாம் அச்சீவ் பண்ணி யூஎஸ்லேக்கு போகும்போது அங்க இருந்துதான் சாப்பிட முடியும் அப்படி நினைச்சுதான் மனசுல இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு வந்து கம்பெனி வந்து ஒரு அமேசிங் சான்ஸ் கொடுத்திருக்கு. சோ நிறைய மக்கள் இது Facebookல பார்த்துட்டு இருக்கு, எனக்கு தெரியும். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆர் யூ எக்ஸைட்டட்? பிகாஸ் நம்ம ப்ராடக்ட், ஒரு ஐவேது ப்ராடக்ட் வாங்குறதோ சாப்பிடுறதோ கிடையாது. 350 வீக்ஸ்ல இந்த ரெவல்யூஷன் நடக்கும்போது அந்த ஹிஸ்டரியோட ஒரு பார்ட் ஆகுறதுதான் இந்த பிசினஸ், இந்த ப்ராடக்டோட இம்பார்ட்டன்ட். நான் சொல்றது ஐவேது உங்களோட கையில வருதா, அமெரிக்காவில இருந்து மேடியன்
யுஎஸ் ப்ராடக்ட் இந்தியாவில கொண்டு வந்து ஸ்டார் 500 கையில கொடுக்கிறதோ நீங்க வாங்குறதோ நீங்க சாப்பிடுறதோ அல்ல இதுல இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பாயிண்ட். சாப்பிடுறதோ அல்ல இதுல இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பாயிண்ட். இதுல இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்னு சொன்னா அது நம்ம வீட்டுல ஷெல்ஃபில வந்து ஐவேது ப்ராடக்ட் உங்களுடைய ஷெல்ஃபில வைக்கிறது தான் இந்த ஒரு பெரிய விஷயம்னு சொல்றது. சோ எனக்கு தெரியும் வெரி I think பிரேம்ஜி yes, Sujit bhai, yes, I can hear. சொல்லுங்க கேட்கலாம் பேசலாம். I think yes, சுஜித் கான் அவர்கள் நல்ல ஒரு மெசேஜ் கொடுத்தாரு நமக்கு இன்னைக்கு. ஸோ மிக நன்றி பிலவட் சுஜித் கான் அவர்களுக்கு. அது மட்டும் இல்லாம அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த ப்ராடக்டை வாங்கலாம் ஆனா சாப்பிட முடியாது, ஒரு நினைவு சின்னமா தான் வைக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. இதை விட ஒரு வருத்தமான விஷயம் ஒண்ணும் இல்ல. கையில கிடைச்சது வாயில கிடைக்காம போனது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. సో இருந்தாலும் నో ప్రాబ్లం, ஒரு నిனைவு చిన్నమా நம்ம வச்சிருப்போம். సో నౌ డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మన తెలుగు స్టేట్స్ లో ఆంధ్ర, తెలంగాణ, తెలుగు నాడు, తెలుగు దేశంలో చాలా మంది ఈ రోజు ఎక్స్పెక్టేషన్ లో ఉన్నారు తెలుగులో ఈ విషయాన్ని వినాలని. సో దానికోసం మన తెలుగు స్టేట్స్ నుంచి చాలా పవర్ఫుల్ లీడర్ అయిన మన బ్లాక్ డైమండ్ అంబాసిడర్, రెస్పెక్టెడ్ డిఏసి మెంబర్ రఘుపతి నాగేశ్వరరావు గారిని ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద ఇన్వైట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. కొన్ని విషయాల్ని మనతో షేర్ చేసుకోవాలని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఓవర్ టు అవర్ రఘుపతి నాగేశ్వరరావు గారు on the spotlight, requesting Nagesh ji to come over to the spotlight and share few words for our Telugu viewers and Telugu distributors from the Telugu states. So Nisha ji, request you to please place Nageshwar Rao garu on the spotlight. Nisha ji, are you there? Yes, I think. Nagesh ji, good evening. Sir, I think there is some technical issue with the connection. Okay. Go to the next. Okay. So Nisha ji, let's go for Canada. Yes. You can Okay. Right. Okay. Before that, okay, shall I invite our Archit ji? Yes, I think we should listen from our beloved Archit ji, our mentor, chief mentor for Vibrant Viva United States. I know, Archit, I can see that special smile on your face. I know, because you know that this is in fact going to hit the US business in a very huge way, and I know your excitement. Please go ahead and share your feelings and your emotions with all our viewers. Over to Archit ji. Right. Yeah. Thank you so much, Premji, for see, I'm so sorry because I'm also traveling. So let me take this opportunity to thank our honorable chairman, C. Ansar sir, and our honorable CEO, Abhilash sir, and our vice president, Imdadullah Sharif sir, because it's a long, awaited, we can just say, announcement. Actually, the entire Distributor Advisory Council members, and even personally, I used to get many messages, many calls from many of the Indian distributors, like why can't we just bring one eyewear at least, if you want to taste it, if you want to see how the product it is. So I'm pretty sure that there is no doubt this is, it's going to be very amazing, because I personally, I've tasted eyewear, and I was so excited because after tasting that eyewear, and at the same time the kind of response what we're getting from United States about this eyewear is unbelievable, my dear brothers and sisters. I can say I have completed my mission 12 weeks in United States. In the last 2 weeks, we have just broken, the best sales in United States, and this week we are going to break the last 2 weeks sales also in US. So the business is really rocking in US. There is no doubt on it, and I'm pretty sure once the eyewear is reach the market, once you're getting a chance opportunity to see, to feel it, drink it, feel it, and definitely you're gonna share to millions of friends in United States. There is no doubt on it. So I'm taking this this opportunity to convey a message to you all that take this as a privilege to buy an eyewear and keep it with you, and that is going to give a extra mileage, extra confidence for you to build United States, because we are so confident to build Indian market, because we are very much
we know that the products what we do in our hand is unbelievable products. That is going to give you the another mileage when you are going to have Ayurveda, with you. So United States, I request the same time, as as a responsible mentor for United States, I request all my Indian brothers and sisters, I urge all of you to please come and let's build United States together. You are going to witness miracles in United States very soon. We are behind that. Every minute we are, every seconds and every minute, we are behind this mission, United States. Within 1 year, there is no doubt you're going to hear a great and exciting news from United States market. By the time, you have to ensure you are also going to create many achievers in United States market. So as a beginning, that take this as an opportunity to buy an Ayurveda and just keep it with you as a pride. So thank you so much everyone for listening, and thank you so much Vibrant Viva for giving this wonderful platform. And once again, thank you Premji for a wonderful platform to just give to talk to all my brothers and sisters of our wonderful Levites. Yes, that was Chief Mentor, Vibrant Viva United States, our beloved Black Diamond Ambassador, respectful DAC member Archit Ramesh. Thank you very much, Archit, for sharing your excitement. So, Iga Namma Bengaluru, Isala Cup Namde Annotara feeling bandagide already. So, we are feeling very, very happy. Modledagi Yelrugu Namaskara, Ivattu Namma call alli join agirtakanta Yella ಕನ್ನಡದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ ವಿವಾ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾನರಬಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹಾನರಬಲ್ ಸಿಇಒ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ DAC ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರೋ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಐವೇದ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐಪಲ್ಸಿನ ಒಂದು ಟ್ವಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಐವೇದ್. ಸೊ ಈ ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಕಾತುರದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 72 hours ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸುವೆನಿರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ US ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವೇ ಒಂದು ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆನ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೋ ಪೀಸ್ನ ಇಡೋದ್ರ ಬದಲು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು US ಇಂದ ತರಲ್ಪಟ್ಟಂತ, ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಐವೇದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ 500s ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಈಗ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 72 hours ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ 72 hours ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಸೇಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಂಪನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ US VOP. ನಿನ್ನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್ ವರ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐವೇದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ US ಹೋದಾಗ ಶರೀಫ್ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಐವೇದನ್ನ, ಬಟ್ ಈಗ ಇರುವಂತ ಐವೇದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ US ನ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಿನ್ನದಂತ ಅವಕಾಶ ನಮಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ 500s ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಐವೇದನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನಲಿ the end of today's session. And తెలుగులో ఈ రోజు మన నాగేష్ గారు లేని కాబట్టి సార్ లేరు ఇక్కడ. సో దానికోసం తెలుగులో మీకు ఒకసారి అనౌన్స్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎవరైతే ఈ రోజు తెలుగు దేశం నుంచి, ఆంధ్ర తెలంగాణ నుంచి ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో, నాగేష్ is joining, I think.
Yes, Nagesh ji, yes, Telugu, yes, wonderful. Nagesh ji, manato ee roju join avutunnaru. Welcome our beloved Black Diamond ambassador and DSC Nagesh garu, over to you. Yes, Nagesh ji. మరి ఫేస్ కనబడుతుంది. కొంచెం డార్క్. Yes, Nagesh garu, go ahead. మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం మేమందరూ. Welcome Nagesh ji. Welcome Nagesh ji. Over to you. Yeah, thank you, Premji. Thank you so much. Today is very, very, very great news to all of us, and I really am surprised actually. Telugu. Okay, Telugu. Guys, to all our Telugu people, మన అందరికీ ఈరోజు ఒక గ్రేట్ న్యూస్ యాక్చువల్లీ. నేను హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ మధ్య జర్నీలో ఉన్నాను. ఈవెన్ దో ఈ న్యూస్ విన్న తర్వాత ఐ ఫుల్లీ ఎక్సైటెడ్. వన్ ఆఫ్ డైమండ్, నేను డైమండ్కి చెప్పాను ఐవేద్ ప్రోడక్ట్ ఇండియాకి వస్తుంది అని. ఈ సో ఎక్సైటెడ్. తను ఎందుకు అంత ఎక్సైట్ అయ్యాడో నాకు తెలియదు. దాని తర్వాత ఐవేద్ యొక్క ఇమేజ్ ఇండియాలో ఎంత ఉందనేది నాకు పూర్తిగా అర్థమైంది. సో ఐవేద్ అనేది ఇండియాకి ఒక మెరాకిల్. ఇప్పటి వరకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ మన ప్రొడక్ట్స్ లో ఐపల్స్ అనేది ఒక దాని మోనార్క్ ప్రొడక్ట్ గా ఉంది. బట్ ఐవేద్ ఐపల్స్ ని బీట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ అలాగే నవడేస్ మనకి ఆయుర్వేద ఎంత ఇంపార్టెంట్ మనం అందరం కూడా చెక్ చేస్తూ ఉన్నాం. బట్ ఈ ఐవేద్ పర్టికులర్ గా నేమ్ ఐవేద్ అనే నేమ్ తో ఈ ప్రోడక్ట్ ఇండియాలోకి లాంచ్ అవ్వటం అనేది ఇట్ ఇస్ వండర్ థింగ్. అండ్ ఈ ప్రోడక్ట్ ని లాంచ్ చేయడానికి కృషి చేసిన షరీఫ్ సార్ కి, అలాగే ఈ ప్రోడక్ట్ ని లాంచ్ అవ్వడానికి పరిపూర్ణంగా కారణమైన అభిలాష్ కి అండ్ ఎంటైర్ కార్పొరేట్ టీమ్ కి నా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టోటల్ ఎంటైర్ వివా డిపార్ట్మెంట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ప్రేమ్జీ. థ్యాంక్స్ అ లాట్. Yes, Nagesh ji, I am seeing, నేను చూస్తున్నాను చాలా మంది మీకు చాలా కమెంట్స్లు వేస్తున్నారు ఫేస్బుక్ మీద. ఒకసారి చూడండి ఫ్రీ అయిన తర్వాత. అసలుగా యాక్చువల్లీ మీరు చెప్పినట్టు లాంచ్ అయితే చాలా హ్యాపీగా నేను ఫీల్ అవుతాను. కానీ ఇది లాంచ్ కాదు, ఇది మనకి ఒక సోవెనియర్, ఒక స్మారకంగా దీన్ని మనం ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు. దీన్ని ఓపెన్ కూడా చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఇది ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ సోవెనియర్. ప్రేమ్జీ, మీ తెలుగు చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. ఇట్స్ సో క్యూట్. కానీ స్వాగతంగా పెట్టుకోవచ్చు అన్నారు. స్మారకంగా కాదు. స్మారకంగా పెట్టుకోవడం అంటే యూజ్ చేయకుండా షోకేస్ లో పెట్టుకోవడం అర్థం. అవును. సో కానీ మనం యూజ్ చేయకుండా ఇట్ ఇస్ వెరీ టెంప్టింగ్ ప్రోడక్ట్. సో మెనీ ఇండియన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూజింగ్ దట్. Thank you, Premji, for giving wonderful opportunity. Yes, that was our Nagesh ji. Yes, Nagesh ji, thank you very much for sharing that message in Telugu for all our Telugu Nadu people, Telugu lovely people from Andhra and Telangana. And now, my dear friends, with that, we have come to the end of the session today. Nisha ji, I think you will have to just put me on the spotlight and mute others, and there's some disturbance here. Okay, right. Okay, so my dear friends, that was the amazing announcement today by our lovely respected CEO Advocate Abhilash ji, and the entire council was here to share that information with us. So thank you one and all for joining with us in this amazing announcement. And this is going to be on the Facebook live. Recorded video is going to be there. So anybody who want to share this with your team members, you can take this link and send it across and share this information. So all the Star 500s, what are you waiting for? Open your virtual office and go ahead and you can have your souvenir of Ayurved immediately by placing the order. Yes. Thank you very much to IndusViva corporate team for this amazing opportunity, and our honorable management. Everybody, thank you very much. Nisha ji, yes, you're not muted. Yeah, I think with that, we have come to the end. Nisha ji, we will have to end the meeting.